Hello students. So the last streaming had stopped abruptly. So let me check अभी कि ये streaming बराबर है या नहीं. I hope you can see my video. Let me know in the chat section अगर audio और video आपको दिख रहा है ठीक से. I cannot see it yet on my device. Oh, sorry. Yes. Okay, तो ठीक है. अब तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. So yes, let's start with today's session जिसमें हम क्लास 9 के CBSE बोर्ड साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर Why do we fall ill, this chapter we are doing, and as I told you ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर देंगे. इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंड इसमें हम पार्ट 2 आज करेंगे. पार्ट 1 we have completed last session. So 1 minute. ओके तो इसमें मेनली 5 टॉपिक हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं. सो फर्स्ट 2 टॉपिक्स वी हैव कवर इन पार्ट 1 and in part 2 we have 3 topics to do. So last session also I had told you what these 3 topics will be. So let me recap again. ये 3 टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं. फर्स्ट वी विल सी infectious diseases के बारे में. What are the organ and tissue manifestations. Okay, this will be our first topic. Then second topic of today will be कि अगर कोई infectious disease हो गई तो उसको sorry treat कैसे होती है, what are the modes of treatment. And third topic will be that okay, if you have got a disease and you treated it, लेकिन it's always better to prevent diseases, right? So ये prevention कैसे होगी, this we will be seeing in our third topic for today. And इससे हो जाएगा chapter खत्म. And then in the next session we will do some practice question answers ताकि पूरा chapter का अच्छे से revision हो जाए. And when you're ready with it, then you can also check yourself how much you are prepared with it. Okay, so let's start with today's session. Let's learn फटाफट. I'll show you a video. वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि आज के 3 टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना है. So I will start and let's see the first topic. See here. Okay. So organ specific and tissue specific manifestation, principles of treatment and prevention. These are our 3 topics for today. Okay, let me see the 1 minute. I hope the session is streaming fine now. Okay. ठीक है, तो let's start. सबसे पहले तो organ specific manifestation and tissue specific manifestation. ये है पहला टॉपिक आज का. तो मे बी द टॉपिक इज अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़े वर्ड्स मे बी यू गेटिंग कंफ्यूज्ड कि ये organ specific manifestation इसका क्या मतलब होता है, या tissue specific manifestation. What does this mean? So this is nothing to worry about. I will tell you the meaning. It is very simple. Organ specific और tissue specific manifestation मतलब क्या होता है? So this only means that कोई भी जब microbe, any type of microbe, if it infects any organ of our body, क्योंकि डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से. एंड ये जो माइक्रोब्स हैं ये जब बॉडी में एंटर करते हैं तो किसी ना किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे, राइट? सो दैट इटसेल्फ इज नोन एज ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. व्हाई इट इज स्पेसिफिक? ऑर्गन स्पेसिफिक मीन्स इट इज स्पेसिफिकली, वो जो माइक्रोब है वो स्पेसिफिकली उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई उसमें वो रह रहा है. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज organ specific manifestation. So for example, we can say some microbes
अगर वो एंटर हो रहे हैं व्हेन वी ब्रीथ थ्रू द एयर, इफ दे एंटर वाया द नोज, ठीक है, तो वो मोस्टली, कैन यू गेस के वो किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे? ऐसे माइक्रोब्स व्हेन दे एंटर थ्रू द एयर विच वी ब्रीथ, यानी वाया नोज को एंटर करेंगे, तो विच ऑर्गन ऑफ अ बॉडी इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड? So that will be obviously lungs. Lungs will be most likely affected क्योंकि एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो फाइनली लंग्स में जाती है। तो लंग्स को आप इन्फेक्ट करेंगे वो जो माइक्रोब्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी नोन एज अ लंग ऑर्गन। जो ऑर्गन है उसमें लंग्स होगा, तो दैट विल बी अ लंग स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन बाय दैट माइक्रोब। ओके, और जब हम ऐसा कोई माइक्रोब होता है जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो हमें कैसे मालूम व्हाट आर द सिम्टम्स व्हिच वी एक्सपीरियंस? अगर लंग्स इन्फेक्ट हो गई तो वी कैन एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स लाइक कॉफ या फिर कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो उससे मालूम पड़ता है कि लंग्स इन्फेक्ट हो गई होंगी। और एग्जाम्पल क्या है? दिस मे बी द केस ऑफ द माइक्रोब। कौन सा माइक्रोब? जो बैक्टीरिया एंटर करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज ऑफ tuberculosis. This infects the lungs, so this will be a lung specific manifestation. Okay, similarly there are many other examples also. तो ये हो गया breathing problems हो गए। अब tissue specific manifestation भी बोला है। So this is nothing but when the microbes are infecting the particular tissues of the body. Now what is the difference between tissues and organs? We have already studied cells के बारे में जब पढ़ा था, तो you know कि we are made up of cells. Now many cells which are similar in structure and function, वो मिलके क्या बनाएंगे? Tissues. And tissues which are similar in structure and perform the same function, they will form the organs. Okay, so if it has infected that tissue, means it is infecting that organ also. अगर वो लंग के टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहा है माइक्रोब, तो वो लंग को इन्फेक्ट करेगा। So you can consider it as a tissue manifestation or an organ manifestation also. So one more example here we can say about organ and tissue manifestation is the HIV virus. Now HIV virus, we know this is responsible for the disease of AIDS. ये enter करता है body में, and we know the means by which HIV virus infects us. Mainly it is by the sexual contact. So when HIV virus enters the body, ये body का जो immune system है इसको ही damage कर देगा। Okay, and when the immune system is the system which helps us in fighting the diseases. तो अगर immune system damage हो गया, तो even a small disease, छोटी छोटी diseases, वो body cannot fight those diseases. For example, even a something very trivial like cough or cold can lead to a disease like pneumonia. Okay, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो गया बिकॉज ऑफ द HIV वायरस। तो वायरस ने मैनिफेस्ट किया कहाँ पे? अपने आप को बॉडी के इम्यून सिस्टम, बॉडी के टिश्यूज में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। सो हियर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो कितना अफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, what will be the severity of the disease? This will depend on the number of microbes जो बॉडी में एंटर हुए हैं। सो अगर ये माइक्रोब्स, सो ऑब्वियस है कि if there are less microbes in our body, तो the disease will be minor. Okay, disease की severity कम होगी and the symptoms will also be minor, बहुत कम होंगे। कभी कभी तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि हमें ऐसी कोई disease है या some microbe has entered. But if the number of microbes, okay, number of microbes is very large, तो वो ही डिजीज, सेम डिजीज जो है उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि इट मे इवन कॉज डेथ। सो वी से इट मेक्स द डिजीज, इट मेक्स इट फेटल। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स क्या हम बोल सकते हैं? लाइक वी हैव सीन, वन इज फॉर
if the microbe enters through nose. That I have shown you. Now let's see some more examples for organ and tissue manifestation. Okay. So wait, yeah. तो second example देखते हैं. Where are right on this side. Okay. So first we have seen if it enters through the nose, then it infects the lungs. तो ये हो गया organ. Secondly, अगर वो microbes enter कर रहे हैं through the mouth, ठीक है, मे बी ड्यू टू द अनक्लीन वाटर या फूड, तो वो कौन से ऑर्गन्स को या टिश्यूज को इन्फेक्ट करेंगे? कैन यू टेक अ गेस? सो ये ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उसी को इन्फेक्ट करेंगे. सो दिस विल अफेक्ट द गट. ओके, गट लाइनिंग को इन्फेक्ट करेंगे. व्हाट इज द गट लाइनिंग? गट लाइनिंग इज नथिंग बट गट इज द tube from the mouth to the anus. पूरा जो when we eat the food until the time we throw the waste out of the body, that full thing is known as the gut. So gut lining will be affected. Those microbes will infect the gut lining. So in that case, the organ या tissue, you can say the tissue is the tissue of the gut lining. And these microbes, इसका example हम लिख सकते हैं. This is the type of bacteria जो ये काम करता है वो है which causes typhoid. So this mostly enters the body through the mouth and it infects the gut lining. Another example we can write of the microbes. So here they may also, it is not necessary कि mouth से enter हुए तो हमेशा gut lining को infect करेंगे. They may also infect some other organ like the liver. और लिवर को जो इन्फेक्ट करेंगे तो लिवर इज अ ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन मैनिफेस्टेशन हुआ, लिवर स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. एंड दिस, इसके लिए हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? यू वेरी वेल नो कि लिवर को कौन सा जो माइक्रोब है वो इन्फेक्ट करता है. दैट इज द वायरस व्हिच कॉजेस व्हिच टाइप ऑफ डिजीज? व्हिच डिजीज? जॉन्डिस, राइट. सो इफ अगर ये माइक्रोब वायरस है जॉन्डिस वाला, तो what you will experience symptoms अलग अलग होंगे. fever होगी, okay, itchiness, rashes and such things. So organ specific and tissue specific manifestations will depend on, mainly it may depend on what? The mode of entry of the microbe, कि microbe कहाँ से enter हुआ और उस specific organ या tissue को वो infect करेगा. okay, बट हमेशा ये ही जरूरी नहीं है कि उसने जहां से एंटर किया है वो उसी पाथवे पे ही रहेगा. सो देयर आर सम माइक्रोब्स जो एंट्री पाथ उनका अलग है, लेकिन जहां पे इन्फेक्ट करते हैं, जहां पे वो अटैक करते हैं, दोस आर द डिफरेंट टिश्यूज. सो वन सच एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ऐसा कौन सा एग्जांपल है? दैट इज ऑफ द HIV वायरस. HIV वायरस is the virus, इसकी एंट्री तो होती है in the body through sexual contact, that we know. लेकिन ये इन्फेक्ट किसको करता है? कौन से ऑर्गन्स को, टिश्यूज को? ये इन्फेक्ट करता है lymph nodes. we know ये इम्यूनिटी कम कर देता है, इम्यून सेल्स, एंड दैट इज बॉडी में इम्यूनिटी is mainly because of the lymph nodes. lymph nodes जो बॉडी में होते हैं, they produce the antibodies जो फाइट करते हैं against diseases. Okay, then another example we can say here कि उसका mode of entry या infect जिसको करना है वो different है. So we can say the example of the the microbes which cause the malaria. Okay, तो malaria किसकी वजह से होता है? that is we know because of mosquito bite. mosquito bite से वो microbe spread होता है, and this will infect mainly where malaria के जो microbes होते हैं, they will infect. First they will enter the liver and then they will infect the red blood cells, RBC को infect करेंगे. ठीक है. So these are some examples I have given you of organ and tissue specific manifestations.
तो दो मेन यहाँ पे फर्स्ट मेन थिंग इज एंट्री मोड जो है, depending on that it will infect that organ or tissue, and second is it may not entirely depend on that, वो अलग अलग टिश्यू या ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ the effects, let's see further the organ और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में जब किसी माइक्रोब ने इन्फेक्ट कर दिया बॉडी को. नाउ वी हैव सीन के इसकी जो सिवियरिटी है, आई विल शो यू. हाँ, वेट, okay, the severity of the disease will depend on the number of microbes. 1 minute, why is this acting like this? हाँ, तो अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम है जिसने बॉडी में एंट्री ली है तो सिम्टम्स कम होंगे एंड द डिजीज विल बी लेस सिवियर. लेकिन जब माइक्रोब ने हमारी बॉडी पे अटैक किया है, व्हेन वी गेट दैट डिजीज, सो जो इफेक्ट्स होंगे उसके जो इफेक्ट्स होंगे they can be of two types. Which two types can the effects be? It may be either tissue specific, यानी कि जिस टिश्यू में इन्फेक्ट किया है related to that, या फिर it may also be general symptoms. Okay, so general symptoms में we can say the common tissue specific जो symptoms हैं वो तो हमने देख ही लिए. I had told you about the jaundice, malaria, जो jaundice है liver को infect करता है. Then it is the bacteria which causes tuberculosis that infects the lungs. So we have cough and breathlessness. वो सब tissue specific हो गए. General effects क्या हो सकते हैं microbes के? That whenever you get a disease, okay, when it hit the microbes in attack a particular tissue, so what will happen? The body will recruit some, यानी अपॉइंट कर देते हैं किसको? They will be recruiting some cells to that tissue कि चलो आप जाके ये सारे cells को बोलेंगे आप जाके इस टिश्यू की हेल्प करो, इस टिश्यू पे माइक्रोब्स ने इनको इन्फेक्ट कर दिया है. So now these cells have to go and they have to fight against those microbes and they have to kill those microbes. Okay, so more now, तो इस टिश्यू में क्या होगा? There will be more number of cells which are going to help in getting rid of those microbes. And this process जिसमें body recruit करती है cells को to fight against these microbes, what is that process known as? Can you guess? उस process को क्या बोलते हैं? Where the body is recruiting cells to fight against the specific microbes which have infected that tissue. So this is known as, that process is inflammation. Okay, inflammation. And inflammation में हम क्या experience करते हैं? Inflammation के experience यानी symptoms, signs which we can see are swelling हो जाती है किसी part पे, you must have noticed, या redness होती है. So these things actually ये signs होते हैं कि our body is fighting against that microbe. Okay, that's why we experience these symptoms. Okay, so now let's see. First topic was organ and tissue manifestations, that is covered. अब second वाला देखते हैं. That was कि disease ने हमें infect किया है. It has manifested itself in some organ or tissue. So now how we are going to treat that disease? So principles of treatment of infectious diseases, they are mainly of two types. So पहली बात है कि yes, यशिका, hi. So कोई भी डिजीज को दो तरह से, पहले तो हम reduce कर सकते हैं symptoms of the disease, and second way is by killing the microbes which have actually caused that disease. Okay, symptoms जब reduce करने हैं, symptoms means you know, अब उस for example if it is the typhoid bacteria, okay, symptom उसमें mainly हर disease का symptom fever तो एक common symptom होता ही है. So maybe you will do something to reduce the fever or to reduce the body pain. So there will be some medicines for that. But those medicines itself will not help in killing that microbe.
killing that bacteria which has caused the typhoid. Okay, and also one more second thing जो हम यूज कर सकते हैं, मेडिसिन तो है ही, मेडिसिन से हम रिड्यूस कर सकते हैं सिम्टम्स को. और एक दूसरी चीज, इफ यू हैव कॉमनली ऑब्जर्व व्हेन यू आर नॉट वेल, तो यू जस्ट फील लाइक डूइंग व्हाट, आपको ऐसे लगता है कि बस हम सोते रहें, वी कीप ऑन टेकिंग रेस्ट, इजंट इट? सो इवन व्हेन यू टेक प्रॉपर रेस्ट ना, तो बॉडी कंजर्व्स एनर्जी, वो ही एनर्जी बॉडी में तो सेम होती है ना. इंस्टेड ऑफ doing some other activities, going here and there or playing or studying, instead of all those things you are just going to take rest. तो वो जो energy आपने बचाई, जो conserve की, that energy the body will use to fight against that disease and the symptoms of the disease. Okay, principles of treatment. Principles means the ways. Okay, the ways of treatment. Okay, and on what they are based on, those things will be known as principles. So for the first type where we reduce the symptoms, या तो मेडिसिन ले लो जिससे आपका बुखार या बॉडी पेन ये सब कम हो जाए. And second thing, obviously you must always take good bed rest, you must sleep more so that you have the energy to fight against that disease. और बहुत कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स रिड्यूस करना, यानी इन्फ्लेमेशन. जस्ट आई टोल्ड यू व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपेंस, बिकॉज आवर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट डिजीज. ठीक है, एंड देन देयर आर सम अदर कॉमन सिम्टम्स जैसे बॉडी पेन, फीवर, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, और इनको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, या वी टेक प्रॉपर रेस्ट एंड वी मे फील हेल्दी. बट द क्वेश्चन इज कि ये हमने क्या, वी हैव eliminated the cause of the disease. जो बैक्टीरिया था जिसने कॉज किया था वो टाइफॉइड, क्या उसे हमने किल किया? So that will happen when we actually take the medicine for killing those microbes. ठीक है, तो yes यशिका, ग्रेविटेशन चैप्टर, yes ग्रेविटेशन चैप्टर का आप देख सकते हो यूट्यूब, लर्न फटाफट के यूट्यूब चैनल पे. I had already taken it starting, I mean दिसंबर में मैंने कर दिया था. टर्म 2 का जो पोर्शन है ना, फर्स्ट आई स्टार्टेड विद फिजिक्स चैप्टर ओनली, उसके बाद केमिस्ट्री पार्ट एंड अब बायो पार्ट लास्ट है, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इट. ओके, सो ग्रेविटेशन की आप सारी एक्सप्लेनेशन लर्न फटाफट के यूट्यूब चैनल पे, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन, व्यू चैनल करके प्लेलिस्ट में यू विल गेट ऑल द प्रीवियस सेशंस and please watch those. Okay, and yes, also after we finish this chapter, साइंस का पोर्शन होने वाला है खत्म, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे फॉर द होल पोर्शन. ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग वील प्रैक्टिस अगेन. ओके यशिका, वेलकम. सो नाउ इफ आई वांट टू किल द माइक्रोब जिसने डिजीज को कॉज किया है, उस बैक्टीरिया से या वायरस से या प्रोटोजोआ जिससे भी मुझे डिजीज हुई है, इसके लिए आई विल हैव टू टेक दैट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, राइट? एंड अबाउट एंटीबायोटिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ओके, एंटीबायोटिक्स दे मे बी, 1 मिनट, या जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया, मोस्टली एंटीबैक्टीरियल are easier to make than the antiviral ones, and that also we have already seen the reason. एंटीबैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया पे अफेक्ट करेगी, उसको किल करेगी, और जो एंटीवायरल है वो वायरस को किल करेगी. बट yes, there are now some antiviral medicines available which are used for treating HIV, virus like HIV. So such type of medicines will help in killing the microbe जिससे disease cause हुई है. Okay, clear? So this is how the treatment of the disease is done. And then this was the second topic of today. And what was the third topic? Treatment. Yes, treatment is good once we have the disease. लेकिन disease होने देना ही नहीं है हमें, isn't it?
We know very well that prevention is always better than cure. So, why? Can you tell me any one reason why prevention is better than cure? ठीक है, तो आई विल टेल यू थ्री रीजंस व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर आपको डिजीज हो गई, ओके, आपने दवाई भी ली, आप ठीक भी हो गए, लेकिन देर में बी सम बॉडी फंक्शंस में बी डैमेज. ओके, सम बॉडी फंक्शंस में बी डैमेज जो बाद में भी ठीक नहीं होते हैं, लाइक इवन आफ्टर यू आर क्योर्ड इट मे हैव डैमेज्ड इट परमानेंटली. So maybe you don't get completely healthy even after taking the treatment. Secondly, even if you're taking the correct medicines, हो सकता है कि you may be bedridden for some amount of time. Bed rest जैसे बहुत लेनी होगी, maybe for 2 days, 3 days. Okay, that is also possible. Yes, after that you are becoming healthy. And third thing is, if you get an infectious disease, तो infectious disease का सबसे what is the worst, I mean, which is the worst thing of infectious disease is that they can spread, you may spread that disease which you have to the people who are around you. So why allow these three things to happen? Why should we get this infected by the microbe? It's always better that we try prevention. Okay, prevention is better than cure. So these are the three reasons. अब prevention करेंगे कैसे? So prevention can be, prevention of disease we can practice in two ways. One is the general methods of prevention, and the second one is the prevention which is specific to that disease. ठीक है, अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कैसे होंगे? प्रिवेंट अगर हमें करनी है किसी डिजीज को, तो हमें क्या करना होगा? वो स्प्रेड कैसे हुई उसका हमें ऑपोजिट चीज करनी होगी, है ना? हाउ डिड इट स्प्रेड? फॉर एग्जांपल, वी हैड सीन एयरबॉर्न डिजीजेस जो एयर से स्प्रेड होती है, राइट? एयरबॉर्न डिजीजेस, तो एयरबॉर्न जैसे कॉफ या कोल्ड, स्नीजिंग, और जो ड्रॉपलेट्स हैं दे आर देयर इन द एयर एंड द पर्सन इज ब्रीथिंग देम मे गेट दैट डिजीज. तो ये प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस, व्हाट शुड बी डन? Obviously you will avoid the overcrowding. Okay, then second mode of spread हमने ये भी देखा था, waterborne diseases. waterborne diseases नहीं हो इसके लिए what can be done so that you don't get the diseases which can spread through water, microbes जो water से spread होते हैं? So that is also very easy thing. Okay, we must always have safe and clean drinking water, right? Pure water. Then we can also say general, जो vector से फैली थी, जो animal से फैली थी diseases like mosquito bites. Mosquitoes कब होंगे? जब गंदगी होगी आजू बाजू. So if there is proper public health, if there is proper hygiene and sanitation, there will be no dirt, there will be no stagnant water, so there will be no mosquitoes, and we can try to prevent such diseases also. Yes, Yashika, boil the water. That's exactly right. Water को boil करने से उसमें जो germs होते हैं, microbes मर जाते हैं. So we should have boiled water. That's right. Okay, and vector वाली के लिए, so all in all if we see, totally actually overcrowding avoid करो, and prevention अभी हमें ये तो अच्छे से पता है कि right now the disease which is in the news since almost 2 years. Now we know the methods to prevent this disease. What are the methods to prevent this disease? Again, we know we can categorize these preventive methods into two parts. कैसे करेंगे? Can you tell me? How can you prevent this disease? I'm sure everyone knows. So we know that we have to wear masks and social distancing, right? Social distancing again is same like this only, actually avoid overcrowding. And second thing is, what is the second most important thing which we have to do? So we have to get ourselves
vaccinated, right? Yes, wash hands is yes, washing hands and maintaining cleanliness, public personal hygiene वो भी बहुत important है. Yes, okay, washing hands every time वो सब आ जाएगा personal hygiene में. So personal hygiene, public hygiene, sanitation, cleanliness ये सारी चीजें तो हर एक डिजीज को अवॉइड करने के लिए हमें करनी ही है. So that's why we list them under the general methods of prevention, right? एंड सेकेंडली ये जो स्पेसिफिक टू दैट डिजीज होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक गेटिंग वैक्सीनेटेड, तो जब हम वैक्सीनेशन लेंगे फॉर दिस डिजीज तो हम उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं लाइक कोविड-19. ऐसे ही देर आर डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिजीजेस, राइट? और थोड़ी बहुत वैक्सीन तो बचपन में ही लग जाती हैं. So those vaccines, what will they do? A vaccine, getting vaccination is like one part of getting immunization. Okay, if we build our body immunity, if the immune system is very strong, so we can prevent diseases even if they enter our body. You know, अगर हम ये माइक्रो की एंट्री प्रिवेंट नहीं कर पाए, अगर बॉडी में एंटर हो ही गए माइक्रो, still our body will be so strong that the immune system will fight with those microbes, will fight with that disease, right? Yes, Mamata Mishra, hi, good afternoon. Yes, आप हमेशा nice लिखते हो, I have seen in all my videos, thank you for that. So immunization से हम body के immune system, also proper nourishment is very important, balanced diet, सारे carbohydrates, fats, proteins, ये सब से भी हमें body की immunity build करनी है, ठीक है? So but this nourishment will come under this one, okay, where I have written this general methods में. The specific methods में which are specific to that disease, we have different types of vaccines for different diseases. वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, उस जो हार्म जो जर्म्स होती है, आई विल शो यू इन द वीडियो. ओके, सो लाइक दिस गर्ल इज सेइंग कि नहीं, मुझे डिजीज को प्रिवेंट ही करना है क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी नहीं है. तो दो टाइप के मेथड्स देखो, जनरल मेथड और स्पेसिफिक मेथड. जनरल मेथड्स में हमने कौन से पढ़े कि एयरबोर्न डिजीजेस को प्रिवेंट करेंगे बाय अवॉइडिंग ओवरक्राउडिंग, surroundings should be less crowded. Then we have seen waterborne diseases के लिए we need clean and safe drinking water so that we don't get that disease. Animal borne के लिए maintain environment, cleanliness. Okay. Specific methods में what we are going to do, we are going to get vaccines. जैसे ये स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टेटनस, डिप्थेरिया, ये सारी जो डिजीजेस हैं जनरल मेथड से कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना बहुत डिफिकल्ट है. सो वी यूज वैक्सीन्स फॉर देम एंड वैक्सीन विल मेक आवर इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, दैट इज द सेल्स ऑफ द बॉडी आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स. ओके, सो कैसे होता है ये, लेट मी टेल यू. जब वैक्सीनेशन होती है, so in our body actually these are the killed or the weakened germs. उस same type की जो germ होती है ना, which causes the microbe which causes that disease, for example polio, तो वो ही killed या weakened germs will be introduced in our body, okay, vaccine से. and then उसके response में क्या होगा, the body, the cells, the immune cells, okay, they will what we actually, these are mainly the lymphocytes, ठीक है, the WBCs, the lymphocytes, they will produce the antibodies which will fight specifically against that disease, against those germs. लेकिन ये germs से obviously हमें कुछ होगा नहीं क्योंकि these are the killed or weakened germs, so vaccination से introduce की. Now once these antibodies are produced in the body, उसके बाद if by chance that microbe enters our body again, the harmful ones, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो फाइटिंग कैपेसिटी बन गई है, वो एंटीबॉडीज बन गई हैं जो उसे फाइट कर सकती हैं.
That's how vaccination works. Okay, so this was the specific method is the second method of prevention of diseases. And with this unharmful agents, I told you they are introduced. Unharmful microbe जो है वो जब फिर एक्चुअली एंटर करेगा तो उससे हम फाइट करेंगे हमारी बॉडी से. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक फॉर टुडे. तो जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो गिव मी द आंसर्स इन द चैट सेक्शन इफ यू कैन. ओके, तो पहला है माइक्रोब्स एंटरिंग वाया द नोज. सो नेम द फॉलोइंग. फटाफट विल डू. माइक्रोब्स एंटरिंग वाया द नोज आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट दिस ऑर्गन. तो नोज से एंटर कर रहे हैं अगर बाय ब्रीथिंग, व्हेन वी ब्रीथ इन, व्हेन वी इनहेल, तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा लाइकली है अफेक्ट होना? So obviously it is the lungs. Okay, because the air we breathe will enter the lungs. Finally, so we write lungs. Second is headaches and nausea are most likely to be symptoms when this organ is infected. So come on, give it a guess. This is very easy. Headaches, headache से आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से organ से related होगा वो infection. Mostly it might be related to brain. Okay, let's see the next one. Swelling and pain. Swelling and pain. Whenever we experience swelling and pain in any region, any part of the body, these are the local effects of this process. कौन सा process है because of which we have a swelling and pain? So that is inflammation. याद है ना inflammation, जहां पे बॉडी ने सेल्स को रिक्रूट किया था to fight against the microbes which have infected those tissues or organs. These types of drugs are more difficult to make. Which types of drugs? Antiviral, क्योंकि viruses का खुद का अपना कोई mechanism नहीं होता है. They will enter our cell, they will live in our cell only, and वो हमारे ही सेल का mechanism use करते हैं to live. तो अगर हमने कोई ऐसे मेडिसिन बनाने की ट्राई करते हैं जो वायरस को किल करें, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो हमारी बॉडी सेल्स को भी इंजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन्स. And let's see the last one, last question. This is one of the disease specific methods of prevention. Disease specific method कौन सा होता है? प्रिवेंशन के हमने दो मेथड देखे, एक था जनरल और दूसरा था disease specific method. So what was that? That was immunization. Right? So with this, we have completed the chapter. So students, thank you for watching. And इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है या कोई टॉपिक है अभी भी which you have not understood in this chapter, write to me in the comment section so that I can take it up in the next class. Okay, and if you have understood everything, you know what you have to do. Please like the video and share it. And I'll see you in my next class.